So today in this video I'm going to tell you how to draw a darker sketches. Okay, so back to back you can see I have made too much darker sketches. Yeah, so let's talk about how I have done it. So for that you need 3 tools. Okay, so first one is charcoal powder. If you don't have, don't worry. चारकोल स्टिक से भी आप चारकोल पाउडर बना सकते हो, उसको सैंड पेपर में रब करके। और अगर आपके पास चारकोल स्टिक नहीं है तो आप ग्रेफाइट पेंसिल के भी थ्रू बना सकते हो, उसकी ग्रेफाइट लीड को यूज़ करके। एंड अब बात करते हैं सेकेंड टूल के बारे में। एंड हाँ, चारकोल पाउडर को हम इस्तेमाल कैसे करें, तो हमेशा अगर आपको डार्क एरिया चाहिए तो आपको अपने फिंगर से उसको ऐसे ऐसे रब करना पड़ेगा, देन ही आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप ब्रश से यूज़ करोगे चारकोल पाउडर को तो वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो एकदम ही टाइनी पार्टिकल्स होती है, जो बहुत छोटी होती है चारकोल पाउडर की, वही पेपर में आउट होगा। एंड बाद बाकी वो इधर उधर उड़ जाएगा और पेपर पे आता नहीं है, और जिसके कारण वो पेपर पे ब्लैक नहीं बना पाता। तो नहीं, ब्रश से आप ना यूज़ करें। अगर आपको एकदम डार्क एरिया चाहिए तो फिंगर से ही आप यूज़ करें, और ब्रश से अगर आपको लाइट शेड चाहिए तो आप वहाँ पर वो शेडिंग कर सकते हो। एंड सेकंड टूल इज़ कैमलिन चारकोल पेंसिल। ओके, वो भी काफ़ी डार्क लुक देता है, विच कम्स इन मे बी ₹15, आई couldn't remember। एंड उसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, लाइक उसे यूजुअली आप अच्छे से शार्प कर लेना। एंड देन अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आई सेक्शन में और नोज में आप उसे कर सकते हो, काफ़ी डार्क लुक देता है। तो नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड टूल। दिस इज स्टेडलर मार्स लुमोग्राफ ब्लैक। ये 8B है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये 85 रुपीज़ की है। मैंने सिंगल वन ही पेंसिल खरीदी थी, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और ये काफ़ी डार्क देता है, लाइक लगता है कि मैंने पेंट किया है उस जगह में, इतनी ज़्यादा डार्क लुक देता है। और या दैट्स इट। सो मैंने यही तीनों टूल का इस्तेमाल करके अपने स्केचेस को डार्क से डार्क कर बनाया है। Turn it on. Turn it on.